Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome back to speech processing. So today we will be continuing our discussion on building up the idea of language models and the various interesting problems and issues that come along the way. So if you remember, in the last class we looked at the probability of sequences and how we can assign probabilities to sequences of words or sequences of letters, and how we can use a corpus, a body of text, to figure out the relative frequencies from which we can calculate the probabilities of entire sequences. We also saw that because searching for entire sequences in a corpus leads to high sparsity, meaning a lot of zeros, and many of those sequences may never be found in the corpus, or are very rare instances in the corpus. So therefore we looked at ways of making our calculations, making the matrices that we are forming, the vectors, more dense, which means that most of the values, most of the places in the matrix or in the vector should be filled with non-zero values, actual meaningful values. And for that we looked at ways of essentially estimating the probability of a sequence from n-grams, and we looked at the unigrams, where we are just looking at the word itself, the bag of words assumption. We looked at bigrams, where we just look at one word history as the context for a particular word. We looked at trigrams, where we look at the a window of two words, two of the last words as the history, as the context, and then so on and so forth. We can have like 4 grams, 5 grams, 6 grams, heptagrams, and so on and so forth. We can basically extend that concept. But again, as we move towards higher order n-grams, the problem of sparsity returns again. And where we left off in the last lecture was the problem of zeros, that what would happen when an actual zero occurs in the calculation of the probability of a sequence. So let's say one particular bigram is missing, or one particular trigram is missing in the entire sequence. So the sequence might be of 100 words, but one bigram is missing, and the probability returns as zero because it was not found. So zero occurrences divided by maybe some occurrences of the denominator. So that zero would convert the probability of the entire sequence to zero, which is a pity. So that's obviously not right, and we need to do something about that. And there are two problems here. One is a more practical problem, obviously, what do you do with the probability of that sequence? And the other is a more theoretical problem that exists in this whole philosophy, in this whole framework of why is the model assigning the probability of exact zero to a particular sequence? Like, why is the model so confident that this sequence should not occur? And there's a problem there. So we'll be touching both of these problems. Again, we discussed these things in quite a lot of detail in the course of machine learning. Here we'll be obviously compressing it and simplifying it and not going into as much detail. However, we'll go into sufficient detail so that those of you who have not taken the course of machine learning are still able to entirely understand the whole concept, obviously without going into the all possible solutions that occur for it, and also without going into the entire mathematical framework that is again discussed in the course of machine learning. So let's begin, but before we go back to sequences, I would like to begin from a slightly different point today. So today we'll be talking explicitly about classification. If you remember, in the last lecture we discussed that the problem of language modeling, that is assigning probabilities to words or probabilities to sequences of words, can be essentially thought of as a special case of the problem of classification. Now, classification means that you, given a particular input, you need to classify it, you need to categorize it in a predefined set of classes. So let me give you some concrete examples. So a classification could be a single label classification, which means that, for example, given a photograph, you need to classify it as a cat photograph or a dog photograph. So that's an example of a binary classifier, which is assigning every input, every incoming photograph, into either a dog or a cat. Whether there's nothing in it, it needs to assign one of these two classes, and whether it's both in it, it needs to assign one of these classes. This is like a one label, single label classifier. Similarly, assigning an email the tag of spam or not spam, assigning I don't know, a text as the label of I don't know, positive sentiment or negative sentiment, and for example, assigning a text the label of a particular author out of a set of n authors. So you need to define whether this was authored by
I don't know, Iqbal or Ghalib or whoever. So you need to, so this is again, all of these are examples of classifiers which are assigning a single label from a predefined set of labels to the input, to every input that is coming in. Another type of classification is what we call multi-class classification, where we can assign multiple labels to each instance, to each input. For example, if you want to assign emotions to an incoming photograph, you could assign essentially the same photograph can potentially have a label of, let's say, happy and surprised, or angry and sad, and so on and so forth. So a single photograph does not need to be confined to a single label or a single emotion. So such examples are instances are examples of multi-label classifiers. With this very brief introduction, today we'll be using the Bayes theorem in its entirety initially, to solve the problem of classification, and then we will see that as we run into the problems of data sparsity, which we have already discussed, we will essentially convert the Bayes theorem into a simpler and into a simplified classifier, which is known as the naive Bayes classifier. Naive meaning simple, or bhola or masoom. So the naive Bayes classifier, and we'll look at the naive assumptions, which you have already looked at in the context of sequences. And from there, we'll build back to the problem of zeros. And hopefully, with all of that, we'll have enough background to understand the problem in its entirety, and we'll be able to discuss it in further details. Okay, so with that introduction, let's begin. All right, so here you have the Bayes theorem again in your familiar form. Probability of A given B is equal to probability of B given A into probability of A over probability of B. So up until now, we don't see anything special here. It's just converting one conditional probability, like looking at it in one direction, it's converting it into an opposite direction. So probability of A given B can now be calculated using the probability of B given A. Until now, we have not looked at it enough to be able to understand what fascinating things are happening in this simple equation. So let's start with an example, and then I'll go into some of the details of what this Bayes theorem is actually doing, and the really powerful things which are happening in this simple equation. All right, so this example is basically taken from this YouTube video by Julia Galef, and this is an amazing video. I would highly recommend it, that you should watch it on YouTube and watch it on her own channel. But let's look at this example, and it's a very real life example. So whenever I teach it, or when I initially studied this example, it gave me a lot to think about in terms of how I make decisions in my everyday life, and how as humans we make decisions in our everyday lives. So let's begin. Let's assume that so the problem assumes that I'm going to a university. So let's assume that the university has just two programs. It has a master's program in business administration, so MBA, and it has a PhD program in mathematics. So just two programs. And let's say I walk into the grounds of the university, and assume that there's something happening, I don't know, a party going on, and there are students who are uniformly mixed together. So some of them would be maths PhD, and the others would be MBAs, and there is no one else. So just these two types of students. So yeah, here's the university, and I chose these images. So the red ones are the math PhDs with the not so well arranged here, and the black ones are the MBAs. So here is a uniform mixture of the students that I encounter when I walk into the university, and then one random student walks up to me, or rather I walk up to him, and we start having a conversation, and I realize immediately in that conversation that student is clearly very shy. So he's depicting every outward sign of being very shy. So not making eye contact, maybe, I don't know, focusing on the shoes just, and then and not making a lot of conversation, not answering questions with complete replies, and so on and so forth, not talking loud enough, and yeah, you name it. So clearly a shy student. So now at this point, I ask myself a question. Given this piece of evidence, given this student, do I believe that he is an MBA or a PhD student of mathematics?
So I leave you with this question. Maybe pause the video and think about this question. What would you believe about him? An MBA student or a PhD in maths? And as you think about it, try also to think about the reasons why you're assigning that particular label, that particular class to that student that you have just known. Maybe you know his name, you don't know anything else, you've just started having the conversation and you just know that he's very shy. All right, so probably at this point, some of you, and when we do it in the class, actually most of the class usually says that the signs of being shy are more likely to come out from a person who has an introvert personality rather than an extrovert personality, and such personalities are usually linked with people who go into subjects like mathematics and who excel to the level that they're doing a PhD in maths. But MBA students are usually believed to be very outspoken, very extrovert, and like who are able to talk and have the art of public speaking uh, comparatively, and so on and so forth. So that's usually the reason that I get, and my students say in the class that okay, that student is likely to be a mathematics in a mathematics student of mathematics. All right, now let's let's assume that this is our answer. So let's analyze that answer. It's based on a prior knowledge that I've just mentioned, that being shy is more associated with being a PhD in maths or a subject like that, compared to being a subject of, let's say, business administration or similar subjects. All right, so it's based on some prior knowledge. All right. However, have we analyzed all aspects of this question? There is a hidden prior here that we did not focus on. And that hidden prior knowledge is, if you go around the world to any university and you compare the number of students in a PhD who are enrolled in a PhD program in maths or I don't know, theoretical computer science or any other similar pure subject, and compare it to the number of students who are enrolled in a program like MBA, which is a threshold program for many professions. So people from different professions come into that program. You will find a clear bias that there are just a handful of students usually who are doing who are doing a PhD in maths, compared to like the large number of students who are doing an MBA. But that hidden prior knowledge that we had was not something that we used in our deduction about that particular person, in our assumption, in our hypothesis that whether that student belongs to the maths program or the MBA. So in other words, did we consider the probability, like without even observing the evidence that that person is shy? Did we consider that what's the probability of a random person approaching me belonging to a particular subject? So for example, I have my eyes closed, I walk in and someone, or I walk up to someone, I run into someone in the ground. What's the probability? And assuming that the population is like uniformly mixed together, and there is no bias in the way they're standing or like walking around in the ground. So what's the probability that that student is a math student or an MBA student? Well, the probability would be based on simple frequency. So if there are, I don't know, 10 math students and 100 MBA students, then the probability of meeting a math student would be 10 over 110. And the probability of meeting an MBA student would be 100 over 110. So that's the probability of a random guy that I've just met, without analyzing whether they are shy or any other personality traits, without any evidence. That's the probability of someone walking up to me belonging to one of these two classes. And now I add on top of that the second piece of information. Okay, so that's the probability of that a person that I meet belonging to the subject. Now, based on this evidence, does that probability change in any way? And that's what the Bayes theorem is really good at. It's able to basically merge together these two probabilities and come out and spit out a number that can give me the probability, the overall probability, incorporating both the prior and the evidence, the likelihood. All right, so now we're getting somewhere.
Let's assume a population, and this is just an assumption. You can have a different assumption. You can even do a survey. You can even go to different universities and figure out the actual number of math students versus the MBA students, or actual number of theoretical computer science students versus the MBA students, whatever. So you can do an actual study, but here is an assumption. Assume numbers. So assume a population of 1100 students. We have just taken a convenient number here. 100 of them are maths PhD, 1000 are MBA. So the numbers seem about right, 1 to 10. 75% of the math students are shy. That's again another assumption. So not everyone in maths is shy. Like some of the very, very outspoken and confident people could belong to that profession. And we have just assume that 15% of the business students are shy. So again, we just assumed a very, very small number, although probably much more than those number of students are shy. So we're just making up these numbers just to get to the concept of like what will come out of these probabilities. So 75% of the 100 are 75 students who are shy in maths, and 15% of the 1000 students is 150 who are shy in MBA. All right, so now we want to figure out the probability of a shy student from maths. All right, so the probability of math given shy is essentially, and we're using here the formula that we found for the joint probability, is basically the count of the joint number of students who are both shy and are enrolled in maths PhD divided by count of shy. So if you remember, we did that quite a lot in the last lecture. So we just calculate these probabilities from these two numbers. If you remember, when I created the initial, when I built up the original problem, I used the same formula, and this is what we use to derive the Bayes theorem. All right, so plugging in the numbers, it's just 33.33%. That is, it's much more likely that that shy student belongs to the MBA program just because of the sheer number of the sheer higher number of the students who are enrolled in an MBA program compared to the number of students who are enrolled in a maths PhD program. We can easily obviously convert these counts to probabilities by dividing the numerator and the denominator by u. Obviously that's just I don't know. The important thing here is, now if I want to assign that student to a particular class, I would assign that student to the higher class. So this is 66.66 versus 33.33. So this is your MBA and this is your maths PhD. So I would assign it to the class which maximizes the probability, which maximizes this overall probability. So yep, that student, according to these numbers at least, is more likely to be a student of MBA. All right. Um, Converting these numbers explicitly into the Bayes theorem, and so in the last example I just used the joint probability. I want you to basically look at this whole thing again directly using the Bayes theorem before we move on and start analyzing it. So just recalculating it slightly differently, you walk into a university with maths PhD and MBA students, you run into a student who's clearly very shy. Is he more likely to be a maths PhD or an MBA? So you use the Bayes theorem. Probability of maths given shy is equal to probability of shy given math. The probability of shy given math into the probability of math over the probability of shy. Okay, let's take a moment and try to understand what we're doing here. हम यहाँ ये कह रहे हैं probability of math given shy, यानी given कि एक student shy है, the probability कि वो math से belong करता है is equal to the probability of shy given math. इस बात का क्या मतलब है? What does this probability mean? इस बात का मतलब ये है कि given हम math के set में हैं, what's the probability of shy? So we have basically reversed it. The probability जिसको हम पहले कैलकुलेट कर रहे थे इस एविडेंस के बेस पे कि वो शाय है, अब हमने उसको रिवर्स कर दिया है कि अच्छा क्लासेस का तो आपको पता है ना, जितने मैथ के स्टूडेंट होते हैं उसमें कितने शाय होते हैं, ये तो कहीं से आप निकाल के ला सकते हैं, कोई सर्वे करवा सकते हैं. So probability of shy given math into the probability of math. What's the probability of someone studying mathematics? And then normalize this whole thing over by using the probability of being shy overall. So what does this probability actually mean? How would it be calculated? This would be the probability of being shy given math plus, और ये बहुत गौर से इसको समझने, probability of being shy given MBA, क्योंकि दो ही classes हैं. So this probability is essentially the sum of the
sum of this the probabilities of being shy across all classes, सबको मिलाकर जो total probability निकल रही है ना, ये वो आप निकाल रहे हैं जी। नहीं, total number of students जो कि shy होंगे maths में plus the total number of students जो कि shy होंगे MBA में divided by obviously in दोनों की दोनों classes से आप इन numbers को लेकर आएंगे and then you'll just sum them up. So this is the overall probability of being shy. So the number of shy students over overall 1100 students, right? All right. We getting somewhere, and then अभी हम इन चीज़ों के कुछ नाम भी रखते हैं बेस थ्योरम के अंदर. We're getting there. Okay, so probability of being math is just count of math divided by the sum of students across all subjects. So count of the students in all subjects. So this is 100 over 1100, which is 0.0909. Probability of being shy is the count of shy over the count of students in all subjects who are present. So just count of shy over count of all students, which is 75 plus 100, so 175 shy over 1100 overall students. So this is your probability of anyone being shy in that population. And now finally the probability of being shy given math. So math के अंदर होते हुए shy होने की क्या probability है, is the joint probability of shy and math over the count of math, because again we're just looking at the circle where we have the math students. So this is 0.75. Now plug everything into the Bayes theorem, this one, and you get 0.3333, which is the 33.33% that we looked at before. All right, you'll do the same for all the classes, and then you will choose the class math or MBA or whatever. If you have, I don't know, even if you have 100 classes, you just calculate these probabilities for all the classes and you find out the argmax, the argument that maximizes the output. So you find the argmax, which in this case would be MBA. All right. So I hope that we're all on the same page, and I hope you're finding it sufficiently easy to understand. And also, I hope you're also contemplating how we incorporate some parts of our prior knowledge into our decision making, but sometimes leave out some other parts of important prior knowledge in the calculations. So sometimes we just focus too much on the evidence and forget what we know about the whole situation beforehand. All right, so this is your Bayes theorem, and now let's look at its component parts in a little bit of more detail. So the probability of H given D, so H is what we refer to as hypothesis and D is what we refer to as, for example, data. So all right, so probability of hypothesis given data, probability of math given shy. So math in this case is one of the hypothesized classes, the other hypothesized class would be MBA. Data is the actual information that you're getting. All right, is equal to probability of data given hypothesis, probability of shy given a particular class, into the probability of that class, the probability of that hypothesis, math or MBA or whatever, divided by the total probability of observing this data, the total probability of observing someone to be shy. So this is the normalizing factor. All right, the denominator is the normalizing factor. So there are names for these things. So this is what we call the prior, and this is what we call the posterior. Now there is something really important to be observed here that you should really think about. The prior and the posterior are very similar animals. Both of them are probabilities of observing a class, the probability of a particular hypothesis. So this is the probability of being math, and this is the probability of being math given the information that we have just received, given the observation that we have just done, given the data. और करें, ये बहुत important बात है. आपकी Bayes theorem priors को posteriors में convert कर रही है using the evidence or using the data that you have just observed. So आपके पास पहले भी कुछ assumption थी कि मैथ वाले स्टूडेंट से मिलने की कितनी probability है, वो बेस थी कम नॉलेज के ऊपर. वो इस नॉलेज पे बेस्ड थी कि अच्छा यहाँ पे 1100 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 100 मैथ्स के हैं, तो 100 ओवर 1100 इज द प्रोबेबिलिटी. दैट वाज योर प्रायर कि मैथ्स वालों से मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मैथ्स के लोग कम होते हैं, ये आपका प्रायर था. एंड देन योर पोस्टीरियर इज कि अब ये जो मुझे शख्स मिला है ये शाय भी है साथ साथ. सो नाउ आई हैव इनकॉर्पोरेटेड द इंफॉर्मेशन दैट दिस इज अ शाय स्टूडेंट and updated the probability in the face of this additional information. So Bayes theorem is a machine that transforms your prior knowledge into what it calls the posteriors based on the actual observations that you have done. So it's really a powerful machine. So the other things that it's using, so that's the first point. It allows you to update our priors to the posteriors using the data.
Prior is our belief about the world without looking at the data. The other thing that you have here is the likelihood. The likelihood is the probability of observing this particular data if a particular H were true. So ये वो चीज है likelihood जिसमें आप उल्टा कर सवाल पूछ रहे हैं. आपने देखा है उसे shy, हो सकता है आपने उसे confident देखा होता, तो तब आप ये देखते कि confident होने की क्या probability है अगर मैं मैथ्स वालों को देखूं, या कॉन्फिडेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर मैं एमबीए वालों को देखूं, या शाय होने की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर मैं सिर्फ एमबीए को देखूं. सो यू रिवर्स द क्वेश्चन एंड द लाइकलीहुड इज एसेंशियली जस्ट कि हर क्लास में जाकर आप ये देख रहे हैं कि इस क्लास में से ये डेटा ऑब्जर्व करने की क्या प्रोबेबिलिटी थी. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सीइंग अ पर्टिकुलर ईमेल फॉर एग्जांपल assuming that the class was spam, the probability of seeing the student assuming the class was math PhD. All right, the final thing that we looked at here is the evidence or the predictive probability. This is the normalizing factor. So this is essentially the total probability of observing that particular data that you have just observed across all classes. तो ये इसको normalize भी कर देती है. So this is essentially the P of D is equal to sum across all classes h dash all classes. So probability of data given h dash into the probability of h dash. So this is essentially the total. So numerator denominator में एक ही चीज है, नीचे उसका sum है और ऊपर उनमें से एक excuse me एक है. So that means कि इससे डेफिनेटली जो ये वाला पूरी की पूरी एंटिटी है ये नॉर्मलाइज हो जाएगी बिटवीन 0 and 1. So the evidence is the probability of observing this data D regardless of the hypothesis, that is summed over all hypotheses. ठीक हो गया जी. So the Bayes theorem is a belief updating machine that relies a lot on the prior. So prior पे बहुत कुछ डिपेंड करता है. अगर आपका prior गलत जगह पर है तो आप गलत जगह पे ही आपका posterior पहुंचेगा, and it would take multiple iterations of the Bayes theorem. अब उस नए prior को आप फिर डेटा देख के अपडेट करेंगे और फिर posterior बनाएंगे और posterior को नया prior बनाएंगे और फिर posterior बनाएंगे. Ultimately शायद आप फिर अच्छे results पे converge कर जाएं, लेकिन initially ये आपको बहुत off ले जाएगा. ठीक है. But if the priors are good, then the Bayes theorem is amazing. Hence, different priors lead to different posteriors. So this is a very important observation, not just in the context of Bayes, but in the context of overall our lives. Our pre-existing notions and beliefs about certain things, about the worldly events, really kind of dictate our outcomes, and sometimes we either focus too much on the priors and do not give significant importance to the evidence. Sometimes we do the opposite. We just forget the priors, which are sometimes hidden, and just observe the likelihoods, just observe the evidence, और उसी की बेस के ऊपर हम अपना पूरे का पूरा फैसला कर रहे होते हैं. आपके घर के बाहर से एक शख्स गुजर रहा है, वो यूं करके आपके घर में झांक कर गुजरा है और आपने कहा ये चोर है फॉर एग्जांपल. इसमें आपने ये तो सोच लिया कि बिहेवियर ऑफ पीकिंग इनटू योर हाउस इज प्रॉब्ली कि वो देख रहा है कि भाई यहाँ पे मैं दीवार कैसे टाप सकता हूँ. ये इग्नोर कर दिया कि आपके घर के सामने से रोजाना के हिसाब से कितने चोर गुजरते हैं. होपफुली इफ यू आर लिविंग इन अ safe enough area, not many, but usually we are quick to basically come to these conclusions just using either the prior or just the likelihood. इन दोनों को mix करके हम balance अक्सर नहीं कर रहे होते. That's why I said the Bayes theorem is much more deeper than it initially looks like. और अगर आप इसके ऊपर जाकर पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ interesting पढ़ने को मिलेगा. और ये कि true Bayesian होने का क्या मतलब है और क्या ये अच्छी बात है या नहीं है. But in any case, what does it even mean, at least objectively? All right, this is something for you to do. So इस process को आप formalize कर लेते हैं. How do you basically go from Bayes theorem and convert it into an actual classifier? So this is your Bayes theorem that you're looking at. Generally, we want the most probable hypothesis given the training data. The most probable hypothesis math है या MBA है, spam है या not spam है, 10 ऑथर्स हैं, इनमें से कौन सा ऑथर है. वी वॉन्ट द मोस्ट प्रोबेबल हाइपोथेसिस इन हाइपोथेसिस में से. ठीक है. सो दिस इज नोन एज द मैक्सिमम ए पोस्टीरियोरी हाइपोथेसिस, द एच मैप. What does that H map mean? It simply means that this is the hypothesis which maximizes this overall value. The hypothesis that just maximizes the outcome of the Bayes theorem. This is what it essentially means. All right.
So how do you basically do that? Argmax is the operator. Basically max का मतलब होता है आंसर में max आना, और argmax का मतलब होता है वो कौन सा आर्ग्यूमेंट है जो कि आउटपुट को मैक्सिमाइज कर रहा है. यहाँ आर्ग्यूमेंट्स आ क्या रहे हैं आपके पास? ये h आपके आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं. सो एसेंशियली दिस लाइन इज सेइंग कि हर क्लास के लिए आप इस चीज को लिख लें. सो फॉर एग्जांपल ये आपने h1 है आपका, लेट्स से मैथ, फर्स्ट हाइपोथेसिस मैथ है. दोबारा से आप इसको यहाँ पर लिखें h2 के लिए. So probability of, sorry, I need to write it correctly. So probability of D given H2 into probability of H2 over the probability of D. Uh, and you basically just maximize over this entire thing. So H1 could be math and H2 could be MBA. H1 could be spam and H2 could be not spam. So you just plug in H1, you then plug in H2, you find out the numbers, ये कितना आया, ये कितना आया. जो सबसे max आया इसकी output में आ जाएगा या H1 या H2. One of these two इसकी आउटपुट में आ जाएगा. ठीक है, दिस इज व्हाट एसेंशियली व्हाट दिस इज सेइंग. एंड दिस इज जो यहाँ से चूज होगी वो आपकी मैक्सिमम ए पोस्टीरियोरी हाइपोथेसिस होगी, या एच मैप जिसको हम कहते हैं. ठीक है, सो आर्ग मैक्स एच बिलोंग्स टू एच, वेयर कैपिटल एच इज योर हाइपोथेसिस स्पेस जिसके अंदर सारी हाइपोथेसिस हैं. इस केस में मैथ है और एमबीए है या स्पैम और नॉट स्पैम है, बट ये क्लासेस काफ़ी बड़ी भी हो सकती हैं. ये अगेन इट्स अ टॉपिक ऑफ मशीन लर्निंग, जो हम यहाँ पे इसकी फर्दर डिटेल में अब नहीं जाएंगे. But anyhow, so this is essentially what you're doing. यहाँ पर अब एक काम और हुआ है, सॉरी, जिसका जिक्र नहीं कर सका. When you're taking a max over these values, जब आप इसके ऊपर max ले रहे हैं तो आप ये ऑब्जर्व करें कि जो डिनोमिनेटर है, the evidence और the predictive जो आपके पास ये normalizing denominator है, ये सेम है अक्रॉस ऑल ऑफ दीज, यानी इसमें भी और इसमें भी ये सेम है. सो जितनी भी चीज़ों के ऊपर आप मैक्स फाइंड कर रहे हैं सबके नीचे आप डिनोमिनेटर में सेम चीज़ लिख रहे हैं. शाये होने की टोटल प्रोबेबिलिटीज तो सारी क्लासेस में जितने शाये हैं मिलाकर, तो ये सेम है. लिहाजा ये आर्ग मैक्स पे इम्पैक्ट नहीं कर रहा. अगर मैं इसको बीच में से निकाल भी दूं तो आपका आर्ग मैक्स उसी जगह आएगा जहां वैसे आता है. तो लिहाजा वी सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन टू दिस, वी रिमूव द डिनोमिनेटर फ्रॉम इट. वी डोंट नीड टू नॉर्मलाइज इट, बिकॉज इसको हम एज अ प्रोबेबिलिटी तो यूज ही नहीं करेंगे ना. हम तो सारी प्रोबेबिलिटीज के ऊपर मैक्स निकाल रहे हैं. मैक्स वोंट बी इंपैक्टेड बाय द कॉमन डिनोमिनेटर. सो कॉमन डिनोमिनेटर को निकाल के हमने जाया कर दिया. और ये चीज़ आप बार बार होते देखेंगे जहां कहीं भी एच मैप यूज होगी, और इवन नाइव बेस के अंदर भी हम ये डिनोमिनेटर में से इसको निकाल देते हैं. ऑल राइट, एक और चीज़ यहाँ पर सिर्फ एक समझने के लिए एक बात और कर लेते हैं. इफ़ वी एज्यूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच जे, देन वी कैन फर्दर सिंप्लीफाई एंड चूज द मैक्सिमम लाइकलीहुड हाइपोथेसिस. तो ये एक बात है जिसकी मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, कि अगर आपके पास द प्रोबेबिलिटी, यानी ये कौन सी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, आपके प्रायर्स हैं. सो इफ़ योर प्रायर्स आर द सेम फॉर डिफरेंट क्लासेस, then you don't need to worry about the prior, and then the only thing you need to worry about is the likelihood. सो अगर फर्ज करें उन स्टूडेंट्स में इक्वल नंबर ऑफ मैथ्स और एमबीए स्टूडेंट होते, यानी मैं दो ऐसे सब्जेक्ट्स चूज करता. फॉर एग्जांपल चलें रफ इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस. हम एज्यूम करते हैं बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स तकरीबन एक जितने होते हैं. नॉट हियर बट इन मैनी अदर प्लेसेस. सो इफ़ इन दोनों के बीच में हम शाये का एक डिसीजन कर रहे होते, तो हो सकता है कि दोनों के होने की तादाद की बेस के ऊपर, लेट्स से 50-50 है, तो दोनों की तादाद की बेस के ऊपर उनका प्रायर हमारा इक्वल होता. सो अगर प्रायर इक्वल है तो फिर टोटल डिसीजन इस पे होगी कि शाये होना कौन सी क्लास में ज़्यादा लाइकली, कितने इंजीनियरिंग स्टूडेंट शाये होते हैं वर्सेस के कितने सीएस स्टूडेंट शाये होते हैं. सो इन दिस केस your maximum a posteriori probability just essentially becomes what's, जिसका हमने इससे पहले भी जिक्र किया था, the maximum likelihood probability. जो probability आपके likelihood को, likelihood, ये likelihood याद है ना, likelihood को maximize कर रही हो, इसको हम maximum likelihood probability कहते हैं, या maximum likelihood hypothesis कहते हैं. ठीक है जी. तो ये अब आपके सामने दो चीज़ें आ चुकी हैं. इनकी यहाँ से आगे जब हम मशीन लर्निंग पढ़ रहे होते हैं तो एक बड़ी तफसीली एक डिस्कशन होती है जो इस पे डिबेट होती है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन वर्सेस मैप के ऊपर. लेकिन यहाँ हमारा वो मकसद नहीं है. यहाँ अब हम इन प्रोबेबिलिटीज़ को पकड़ेंगे, स्पेशली इस मैप प्रोबेबिलिटी को, और इससे कुछ एक्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. सो वी गोना टेक अ फ्यू एग्जांपल्स एंड वी विल ट्राई सिमिलर टू द प्रॉब्लम दैट वी जस्ट सीन. पहले इसी को एक्सटेंड करेंगे, इसके कुछ और इसमें पैरामीटर्स लाएंगे, कुछ 2-3 एग्जांपल सॉल्व करेंगे, और उसके बाद देन वी विल सी कि अच्छा ये प्रॉब्लमेटिक कब बनती है, एंड देन विल कन्वर्ट इट इनटू द नाइव बेस्ड क्लासिफायर.
So in all of the upcoming examples, जिस तरह से अभी हमने किया था, I'll be using these forms of the Bayes theorem, जो कि आप इससे पहले भी देख कर आए हैं. So the probability of hypothesis given data को मैं calculate करूँगा from these counts, जहाँ पर hypothesis और data इकट्ठे कर रहे होंगे, and then the total count of the elements of that particular class, जिससे वो belong कर रहा होगा. So H for example यहाँ पे math है, और D for example यहाँ पर जो है वो shy है. So ये दोनों probabilities जैसे अभी हमने निकाली थी, similarly इसको हम probability से भी निकाल रहे होंगे कहीं कहीं, and then finally we will also be using the full form of the Bayes theorem. तो ये सिर्फ मैं जल्दी जल्दी ये सब कुछ करूँगा, आपके जहन में रहना चाहिए कि कहाँ से ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो रही हैं. ऑलराइट, उसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं. वही सेम सिनारियो है, हम एक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मिक्स खड़े हुए हैं. एंड नाउ instead of just considering two subjects, let's consider three subjects. So in a population of 600, we have 100 mathematics students and 75% of them are shy, 200 business majors and 15% of them are shy, and 300 CS students and 50% of them are shy. So I've just placed the shyness somewhere in the middle of the two. I don't want to offend any one of you, चाहे आप mathematician हैं या चाहे business major हैं. I would rather offend my own class, which is the CS majors. So आप लोग बेचारे बर्दाश्त करें, क्योंकि I am also a CS major. So one can say such things about one's own class. All right. So now, given that a student is shy, which is the most likely subject? So again वही वाली बात है, evidence वही आपको मिली है कि वो shy है, वही आपने observe की है, and now you want to find out कि subject क्या है. So probability of math given shy किस तरह निकलेगी, probability of business given shy किस तरह निकलेगी, और probability of CS given shy किस तरह निकलेगी, and then we just pick the hypothesis, the subject which with the highest posterior, with the highest outcome. ठीक है. So ये argmax over all subjects इस चीज़ को हम करेंगे, और again हम इसके denominator में से p shy, you can see that this is common in all of the probabilities. So जैसे अभी बात हुई थी, we just remove it without influencing anything. So once you calculate these numbers, which I will leave it for you to do on your own, you figure out that these are the probabilities. You just plug in and you get these outputs. So it's 0.125 for math, 0.05 for business, and a very high 0.25 for CS. So therefore the student is most likely a CS major. So now you've seen your first example of doing a single label classification in three classes. So you just picked out the most likely hypothesis. All right, so given obviously the prior as well. All right, let's move on. Let's look at some other examples. So here is an example, which is actually this. We will do at least two of this type, and then we'll do an example with words. So let's quickly do this. Or in tamam examples में once I give you the questions, मेरी आपसे दरख्वास्त ये होगी कि आप पहले इनको एक दफ़ा खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, before I move on and solve these for you. All right, so here's the statement. 1% of women at the age of 40 who participate in a routine screening have breast cancer. 80% of women with breast cancer will get positive mammograms. So mammogram is the test जिससे breast cancer diagnose होता है. So let's say 80% जो है जिनको breast cancer होता है उनके positive mammograms आते हैं. ठीक है. 9.6% of women without breast cancer will also get positive mammograms. So false positives. 9.6% of women के जो हैं वो false positives भी आ जाएंगे, और जो है वो 80% के जो हैं वो true positives आएंगे. ठीक है. और ये जहन में रहे कि 1% of women at the age of 40 जो हैं वो उनमें ये चीज़ होती है usually. So a woman in this age group had a positive mammography in a routine screening. What's the probability that she actually has breast cancer? Now it is a very relevant, very everyday example. Replace this disease with COVID, replace this disease with dengue, with any other medical testing. You will get similar numbers जो उस test के लिए मौजूद होंगे, and this will explain to you a lot what does medical testing even mean. And this actually raises a lot of questions about medical testing as well, जिसमें से एक आध काम कोशिश करेंगे कि आपको जवाब भी दे देंगे कि आखिर ये टेस्ट अगर पूरी तरह से यानी फुल प्रूफ नहीं होते, and there are always false positives and false negatives, then why do we perform these tests anyway? उसकी बात अभी हम करते हैं. So calculate these on your own. I hope कि आपने पॉज किया, कैलकुलेट करने की कोशिश की कि अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है that that person actually has that disease. All right. So
in the same spirit जैसे हमने पहले ये theorem बनाई थी, so the women with cancer for example हमारी class A है, and the women with positive mammograms हमारी class B है, और इन दोनों में कोई ना कोई overlap है, in this case a very high overlap. If we restrict our universe only to B, only a very small percentage actually have cancer. So you can clearly see कि हमारी जो क्लास बी है उसके अंदर बहुत थोड़े ऐसे लोग हैं जिनको सचमुच का कैंसर है, और बाकी बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं है. बट व्हाई इज दिस हैपनिंग, अभी देखते हैं. assume again, मैं ये population assume करवाने वाला तरीका अक्सर यूज करता हूँ because it's usually easy to visualize and do. In this case you just need to come up with an initial number for the total population, and everything else follows from the numbers that you're already given, the fractions that you're already given. Usually we try to assume a starting number, कहीं मैं 1100 कर रहा हूँ, कहीं 1000 कर रहा हूँ, हम ऐसा नंबर लेते हैं जिससे आगे का मैथ्स आसान हो जाए. आप जो मर्जी लेना चाहें, 1000 की जगह 10,000 से शुरू करें या 100 से शुरू करें, तब भी आप सिमिलर रिजल्ट्स तक पहुंचेंगे, बस कहीं कहीं कैलकुलेशंस आसान या मुश्किल हो सकती हैं. सो 1000 का 1% भी निकालना आसान था और 9.6 निकालना भी आसान था, तो लिहाजा भी जस्ट assumed an initial population of 1000. So assuming a population of 1000 students, 1% of them have cancer. So 10 women जो हैं वो उनमें से 1000 में से उनको कैंसर होगा. Of these 80% यानी 8 women also test positive. These are your true positives. 990 women do not have cancer, and of these in 990 की 9.6% ऐसी हैं यानी 95 women who test positive. All right, so 95 false positives and 8 true positives. Okay, of these 103 जिन सब का positive आया, 8 plus 95 women that test positive, only 8 actually have cancer. So now you see why there is a difference between the sizes of these two circles. So therefore the probability of cancer given a positive result is the probability of cancer given positive is equal to the total number of patients who have cancer and who test positive divided by the total number of positive test results. क्योंकि आप class तो इसी से belong कर रहे हैं ना. This is 8 over 103, which is just 0.076%. So so therefore, what you're getting here is a very interesting result, in the sense कि इस टेस्ट के पॉजिटिव आने की वजह से आपको, so this is 0.076, not 0.076%, it would be 7.6%. So 7.6%. So जो इंटरेस्टिंग बात है ऑब्जर्व करने की वो ये है कि टेस्ट पॉजिटिव आया, लेकिन उसके नतीजे में the probability of having cancer is just 7.6%. Why do this test anyway? मतलब this is very low. कि टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद भी जो probability है वो खाली 7.6% है. But now compare it with the probability without doing this test. That probability was just 1%. So it was 1% before any test. क्योंकि उस एज में 1% खवातीन को जो है वो ये कैंसर होता है. And now after observing this evidence जो कि हमारे टेस्ट का रिजल्ट है, we have increased that probability to 7.6%. So the way medical tests work is that they're taken in correlation, they're taken in accordance with actual symptoms जो उसके साथ मौजूद हो, and secondly इनकी बेस के ऊपर now more expensive tests could be conducted. So the first line of tests are, it's often attempted कि first line of tests इतने ज़्यादा expensive ना हो, ताकि उससे आप you do like a pre-screening, कि उससे थोड़ा सस्पेशन बढ़ जाए. वो लोग कुछ एक छोटा ग्रुप आपके पास आ जाए जिनमें अब सस्पेशन बढ़ गया है कि शायद ये बीमार है. अब उनका कोई और टेस्ट होगा इसके बाद फर्दर इस्टेब्लिश करने के लिए, और साथ साथ देखा जाएगा उसकी उनकी सिचुएशन को, उनकी कंडीशन को, उनकी हेल्थ को, उनके फर्दर और सिम्टम्स को. तो ये सारी चीज़ें मिलाकर टेस्ट को जो है वो इवेल्युएट किया जाता है. तो ये बात भी जहन में रहे कि जब हम कह रहे होते हैं लेट्स से कोविड के अंदर पॉजिटिव आने का जी क्या मतलब है, जिनको नहीं भी होता उनको भी पॉजिटिव आ जाता है, जिनको होता है उनको भी नेगेटिव आ जाता है. येस, बोथ false positives, false negatives are present. However, the testing just establishes, in addition to the symptoms that that person is having, it just establishes the probability कि जो है वो पहले कितनी सस्पेशन थी कोविड होने की, और इस टेस्ट के बाद वो सस्पेशन बढ़ गई है या कम हो गई. So this is how it proceeds. I hope it's clear. Now let's do the same example using the explicit form of the Bayes theorem. All right, so now we'll be using HMAP directly. So what we're going to do is we're going to find the probability of cancer, which is 0.01, the probability of not having cancer, which is 0.99,
The probability of positive given cancer is 0.8. The probability of negative given cancer is 0.2. I would like you to calculate these probabilities from the actual numbers. And now the probability of positive given not cancer is 0.096, and the probability of negative given not cancer is 0.904. So now you just calculate the probability for all of the classes. The probability of cancer given positive is probability of positive given cancer into probability of cancer, which is 0.8 into 0.01, which comes out to be 0.008. The probability of not cancer given positive is the probability of positive given not cancer into probability of not cancer, which comes out to be this second number. Therefore, your H map, so this is now just you're figuring out which one is more probable. In this case, you're not calculating the explicit probability. You're just finding the H map कि इन सब में से सबसे ज़्यादा probable कौन सा है, and that comes out to be not cancer. अगर वो थोड़ा सा भी ज़्यादा होता तो हम इसको choose कर लेते, ये H map है. If you want to retrieve the actual probability of cancer given positive, you can just normalize this whole thing by the evidence, which is the total probability of positive across all classes, यानी cancer and not cancer. So वो ये explicit form आ जाती, जिसके अंदर आप ये plug in कर देते. ऊपर की चीज़ तो आप निकाल ही चुके हैं, पॉजिटिव कैंसर गिवन पॉजिटिव को, ये वाली चीज़ आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं. इसे सिर्फ डिवाइड करना है अपने probability of being positive के ऊपर, and for that you just sum up across all classes the probability of positive given cancer and the probability of positive given not cancer. So once you plug in this evidence, then you get the actual probability, which comes out to be 0.076, that is 7.6%. अगर परसेंटेजेस में आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं. ठीक है जी, क्लियर हो गया. आई होप दैट यू आर क्लियर अबाउट एवरीथिंग नाउ. आई होप दैट दिस इज fairly straightforward for you to calculate the probabilities. जो यहाँ निकली हुई हैं वही numbers जो आपने assume किए थे अभी पिछले, उसमें आप उससे भी निकाल सकते हैं. You can also use, without using the numbers, you can also calculate it like that. Because हमें पता है probability of cancer 1% थी, 1% लोगों को कैंसर होता है, तो that was why it was 0.01. तो लिहाजा बाकी सबको नहीं होता, तो it was 0.99. And then the rest of these numbers follow कि जिनको कैंसर होता है उनमें से 80% के पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, तो लिहाजा 20% के नहीं आते. जिनको नहीं होता उसमें से 9.6% के पॉजिटिव आते हैं और 0.904% के नहीं आते. ठीक है, तो लिहाजा ये सारी चीज़ें हमने इस केस में, इफ़ यू डू इट लाइक दिस, यू डोंट इवन नीड टू स्टार्ट विद एन इनिशियल assumed population. You can just use the numbers that were given in the question. Alright, so although HMAP is not cancer, Bayes' theorem has updated our belief about the probability of cancer from its prior of 0.01 to the posterior of 0.076. So 1% से 7% पे 7.6% पे ले गया using data, that is the positive test result जो आपके पास आया है. उस data से इसने आपकी belief को update कर दिया है. Let's look at another quick example. इसको भी ये पढ़ने के बाद आप pause करके एक दफ़ा खुद solve कर लीजिएगा. Now I'll try to move a little bit quickly through this. Suppose you're a nurse screening a set of students for a sickness called diseasitis. Very creative. You know from past population studies that around 20% of the students will have diseasitis at this time of the year. So you're testing for diseasitis. तो ये अब आपके पास आ गया ना, clearly नजर आ रहा है ना कि क्या चीज़ है. मैं बोल इसलिए नहीं रहा because I asked you to pause the video. By the way, pause करके अभी solve कर लें, क्योंकि जब मैं पढ़ भी रहा हूँगा तो I'll be marking stuff in it, तो आपको help मिलने लगेगी. Alright, so prior यहाँ से आ गया 20% को जो है वो diseasitis होता है इस वक्त. You're testing for diseasitis using a color changing tongue depressor. So ज़बान पे कुछ रखते हैं, उसका रंग बदल जाए अगर तो होता है, अगर नहीं बदले तो नहीं होता. Which usually turns black if the student has diseasitis. Among patients with diseasitis, 90% turn the tongue depressor black. So for true positives. However, the tongue depressor is not perfect and also turns black 30% of the time for healthy students. So your false negatives. One of your students comes into the office, takes the test and turns the tongue depressor black. What's the probability that they have diseasitis? ठीक है, बिल्कुल similar problem जैसे इससे पहले आप 2-3 देख चुके हैं. ये बार बार मैं इसलिए करा रहा हूँ कि बिल्कुल ये आपके जहन में क्लियर हो जाए कि how do you use Bayes' theorem in such situations. Alright, so first we imagine a population of let's say 100 students. ये पहले वाले तरीके से कर रहे हैं, of whom 20 have diseasitis and 80 don't. So ये दो classes आ गई. अब इन दोनों में से देख लें कि कितने positive आएंगे. So 90% of 6 students turn their tongue depressors black, which is 18 students. ठीक है, 90% of 20, and then 30% of healthy students, which is like 24 students, also turn their tongue depressors black. तो अब आपके पास वो सारे students आ गए हैं जिनके tongue depressors black हुए हैं, जिनका test result positive आया.
So what's the probability that a student with a black tongue depressor has diseases? So 18 students हैं with black tongue depressors, uh, 18 6 students हैं with black tongue depressors. So you just add it and you find out the total of number of students जिनके tongue depressor black आए, all positives. So you just essentially are doing the probability of diseases given positive is the sum of students who have both diseases and are sick divided by total number of students जिनका test result positive आया. It comes out to be 0.42, that is 42.8%. Probability of being sick is 0.428. ठीक हो गया जी. You could अब obviously at this point the probability of being healthy is higher, which is around 57.2%. So ये दूसरी तरफ से निकल आएगी. अब इसी काम को अगर HMAP से करना चाहें वो भी एक दफ़ा देख लें. If we do the same using HMAP, you find the probability of diseases 0.2, which is 20% है, बाकी ना होने की 0.8 है. Positive given diseases दिया हुआ था हमें 90% turn the tongue depressor black, so 0.9, and 0.1 is negative given diseases. Your positive given not diseases is 0.3 false positives, and then true negatives आपके पास हैं 0.7. So these are your true negatives, these are your true positives, these are your false negatives, and these are your false positives. Okay, using these you can easily calculate the probabilities for both of the classes, and then just pick the top one, and that's your HMAP, which is not diseases. You can also get the total probability, the complete answer, by just adding in the evidence, and you do that and you find out that it is 0.428. So the same answer, but this time without assuming an initial population. ठीक है जी. और अगेन आपकी जो है वो बिलीफ अपडेट हुई है 0.2 से which was your prior to 0.428, which is the posterior based on the positive test result. All right. So यहाँ पर अगेन ये बात हम इससे पहले भी कर चुके हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स को ये आंसर जो है ना वो काउंटर इंट्यूटिव लगता है कि ये क्या बात हुई, मतलब द टेस्ट करेक्टली डिटेक्ट्स डिजीजाइटिस 90% ऑफ टाइम. तो फिर ये इतना कम प्रोबेबिलिटी क्यों है अगर टेस्ट पॉजिटिव आया है कि उसके बीमार होने की. Excuse me. If the test comes back positive, why is it still less than 50% likely that the patient has diseases? Well, the test also incorrectly detects diseases 30% of the time in healthy patients, and when we start out we have lots of more healthy patients than sick patients. तो ये दोनों चीजें मिलाकर कि आपके false negatives false positives आते हैं और आपकी जो class है of healthy वो बहुत बड़ी है compared to class of sick. So that's why the absolute numbers come out to be very high for students for the class जो कि healthy की है. ठीक है. So the test provides some evidence of the patient being sick. It goes from 20% to 43% afterwards, prior to posterior. So we need to perform further tests, maybe more expensive ones, and also look at other symptoms जो है to figure out whether the test result really means what it's indicating. All right. अब आखिरी एक एग्जांपल हम इसकी करते हैं जिसमें वर्ड्स के साथ कर लेते हैं before we move on to other stuff. So let's assume 10% of all tokens in a corpus is the word theater. So सारे tokens में से 10% tokens जो हैं word theater के. 80% of times it is preceded by the word movie. ठीक है. So 80% ऑफ टाइम्स जो वर्ड जब भी आपके पास थिएटर आता है उससे पहले वर्ड मूवी आ जाता है. सो ये दूसरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिली. 25% ऑफ अदर वर्ड्स आर आल्सो प्रीसीडेड बाय द वर्ड मूवी. अब आपको एक सेंटेंस में वर्ड मूवी मिला है. व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि इसके बाद आने वाला वर्ड जो है वो थिएटर होगा. सो मूवी मिल चुका है, ऑब्जर्व हो चुका है, थिएटर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है. अब ये खुद करें, जरा पॉज करके खुद करें. बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी आप करते हुए हैं. ठीक है. होपफुली आपने पॉज किया, आपको प्रायर नज़र आ रहा है. ठीक है. थिएटर आने का प्रायर कितना था? 10%. और आपको ये भी नज़र आ गया है कि आपको लाइकलीहुड्स वगैरह कहाँ से मिल रही हैं. मूवी वो चीज़ है जो आपको मिल चुकी है. दिस इज़ लाइक योर पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट, एंड देन यू नो कि पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट आने के बाद कितनी दफ़ा थिएटर आता है और कितनी दफ़ा जब ये थिएटर नहीं भी आता तो मूवी जो है वो किसी और मूवी के बाद कोई और वर्ड आता है. सो लेट्स क्विकली नाउ कैलकुलेट दिस. Assume we have 1000 tokens in our corpus. 10% of them, that is 100 tokens, are the word theater. Of these 80% theater tokens are preceded by the word movie.
ठीक हो गया. 900 words in the corpus are words other than theater. Of these, 25%, that is 225 tokens, are preceded by the word movie. ठीक है. So of the 305, that is 80 plus 225, so this 80 plus this 225 words that are preceded by the word movie, 80 are theater. इनमें से 80 जो words हैं वो theater हैं. So what's then the probability of theater here? The probability of theater given movie is the total count of movie theater over the count of movie token, which comes out to be just 26% and 0.262. तो ये तो काफी low probability आई है इसके ये होने की. But the thing is, this starts making more sense when you apply the H map here. So when you apply the H map here, of all the words that occur after movie, here is a sorted breakdown. So theater 80 times आया, let's say movie tickets, ticket 70 times आया, movie night में night 40 times आया, movie food में 25 times ये आया, movie plans 10 times हमें मिला. Therefore, of all the continuations of the word movie, the word theater is the most probable one. So the H map is theater. आपने सबके लिए ये वाली जो probability निकाली और सबको निकालने के बाद आपके पास जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आ रही है वो आ रही है थिएटर के लिए. आप इसको फुल फॉर्म ऑफ बेस थ्योरम से भी निकाल सकते थे जैसे हम पहले निकालते आए हैं, बस सिर्फ उसमें आपके डिनोमिनेटर के अंदर वो डालने की भी जरूरत नहीं है, एविडेंस फिर भी चल जाएगा. सो मॉडल्स दैट असाइन प्रोबेबिलिटीज टू सीक्वेंसेस ऑफ वर्ड्स आर नोन एज लैंग्वेज मॉडल्स, जिसकी अभी हमने इससे पहले बात कर ली है. लैंग्वेज मॉडलिंग कैन बी व्यूड एज क्लासिफिकेशन, जैसे हमने बात की थी. ईच वर्ड कैन बी थॉट ऑफ एज अ क्लास, एंड सो predicting the next word is classifying the context so far into a class for each next word. ठीक है. So WMAP, word maximum a posteriori, is argmax W belonging to the vocabulary, all possible words, probability of word given context, which is argmax word belonging to vocabulary context, और उसके बाद आने वाला वर्ड, यानी सर्च करें कितनी दफ़ा कॉन्टेक्स्ट और वर्ड आया है और डिवाइडेड बाय कर लें कितनी दफ़ा खाली ये कॉन्टेक्स्ट आया, यानी ऑफ ऑल द टाइम्स दैट दिस कॉन्टेक्स्ट अकर्स कितनी दफ़ा वो इस वर्ड के साथ अकर होता है. ठीक है. तो अब आई होप कि इतने अंदाज से इसको देख लिया है कि आपके जहन में ये क्लियर हो गया होगा. Now we are ready to start looking at the naive Bayes classifier. अब हम पूरी तरह से Bayes को यूज करते हुए क्लासिफिकेशन कर चुके हैं. So now we are ready to see कि एक और एंगल से कि ये Bayes जो है वो कब हमें प्रॉब्लम करता है और कब हमें naive Bayes चाहिए होता है. तो अब हमें पहले हम इसको समझें कि कैसे काम करता है. Let's quickly come up with a problem जिसको फिर हम सॉल्व करते हैं naive Bayes से और फिर देखते हैं कि हमने क्या करना है. Alright, so we'll try solving the problem of spam versus not spam for emails. So let's assume we have some training data. So the way the problem is described is that we have these bunch of spam emails and not spam emails in our training data. And what we're going to do is we will just pick the entire vocabulary of those emails, and we will just count the frequencies of occurrence of every word in those emails. So यहाँ पर हो जो रहा है वो simply ये हो रहा है कि for example x1 could be, let's say, and x2 could be, I don't know, boy, and x3 could be happy, I don't know, xn could be school, whatever. So these are all words जो कि हमारी emails के अंदर हमें मिले हैं, and we just find कि इस email के अंदर, इस particular instance के अंदर 2 दफ़ा word आया है, कभी इसमें word boy नहीं आया, happy 1 दफ़ा आया है, school 19 times आया है. Similarly इसमें 3 times word आया है, 1 times boy आया है, 0 times happy आया है, 22 times school आया, and so on and so forth. And we do the same for both sets of emails. तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि this x1 to xn is the joint vocabulary of all the emails. So इस list को बनाने के लिए either you can just pick up the dictionary and take every possible word, or you could just find out all types across all emails. Types आपको याद होगा unique words, so all unique words across all emails. So सारी emails की vocabulary को आपने जोड़कर union लेकर एक vocabulary बना दी और उसके बाद आपने इन सब की occurrence जो है वो सारी emails में find कर ली. And now the classification problem is that you get a test email. So this was your training data. This is all your training data. And now you have a test email. And the task is that given this email, अब हम क्या करेंगे? यही vocabulary x1 to xn use करते हुए इस email के अंदर भी frequencies निकाल लेंगे. So we need to essentially classify this test email either as spam or not spam.
हम इसको स्पैम वर्सेस हैम भी कहते हैं, बट लाइक स्पैम और नॉट स्पैम हमने इसको मार्क करना है. सो व्हाट वी गोना डू इज वी सेम वोकैबुलरी यूज करते हुए हम निकाल लेंगे इसमें इतनी दफ़ा आया है, बॉय इतनी दफ़ा आया है, हैप्पी इतनी दफ़ा आया है, स्कूल इतनी दफ़ा आया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. पूरी की पूरी हमने वोकैबुलरी के इसमें भी काउंट्स निकाल लिए. और उसके बाद वी बेसिकली यूज दीज काउंट्स समहाउ टू फिगर आउट कि ज़्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी है या ज़्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी है. सो आपको ऑलरेडी अब सेंस बन रही होगी यूजिंग द बेस थ्योरम इसको कैसे सॉल्व करना है. बट लेट्स कंक्रीटली solve a few problems of this type, and the algorithm that we're going to use is the Bayes theorem, and we will explicitly be using the naive Bayes classifier. So the way we are going to describe this problem is that here is your Bayes theorem, probability of hypothesis given data, meaning probability of spam given जो भी हमारे पास जो है वो डेटा यहाँ पर आ रहा है, which is the email. So probability of spam given this email is equal to the probability of email given spam. यानी इस तरह की email spam की क्लास में होना उसकी probability multiplied by the overall probability of spam. Spam आने की क्या probability होती है, divided by the total probability of getting an email like this. So I hope this is making sense. So your class map would be argmax across all classes. Probability of class given email is equal to argmax class, probability of email given class into probability of class over probability of email. सारी classes पे इसको रख कर देखेंगे, जहाँ max answer आएगा वो class हम return कर देंगे कि ये इस class से belong करती है, चाहे वो spam है या not spam. और जिस तरह से हमने पहले देखा था कि अब यहाँ पर email represent हो रही है in words. This is what we call the bag of word model. So the word frequencies are actually representing each email. तो एक email के अंदर ये vector होगा, let's say 2, 0, 5, 95, whatever. ये सारे vectors represent कर रहे हैं हर email को कि उसमें कौन सा word कितनी frequency. So the relative frequencies of, or the distribution of the frequencies of the words in that email is essentially the email. ठीक है. And now so ये वाली distribution आपने observe की, क्या probability है एक particular class की. So you basically say कि अच्छा जी, given a particular class, इस तरह की distribution of frequencies आना, of words आना, क्या उसकी probability है into the probability of, let's say, spam या not spam, divided by the probability of observing this kind of an email. ये निकालना इतना आसान नहीं था, लेकिन fortunately हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है. So लिहाजा और we are left with the numerator, जिसके ऊपर हम h map find कर लेंगे. So this is your class h map, और इस तरह से हमने ये निकालना है. अब हम इसको पकड़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. So rather than first understanding what the naive Bayes classifier is, we will just try to solve it. So we will just try to solve the problem using the naive Bayes classifier. We're going to use it before completely understanding what it is. Although कि हम इतना कुछ अब तक देख चुके हैं इस discussion में कि हमें already हमने वो parts देख लिए में हैं, लेकिन जब हम एक दफ़ा इसको पढ़ कर दोबारा से उनको revise करेंगे तो काफ़ी चीज़ें further clear हो जाएंगी. All right. So this is your problem. What's the probability that a randomly selected email would be spam? So ये probability निकालने के लिए what you can do is, this is your prior. So the prior of the spam could be, for example, अगर आपके पास ये सारी emails हैं और हम फर्ज करते हैं हमारे पास ये 1, 2, 3 spams हैं और 1, 2, 3, 4, 5 not spams हैं. ये मेरा पूरा total training data set है. So that means कि the count of the spam emails is 3 and the count of not spam is 5. So therefore the probability of spam is number of spam over total number of emails, which is 3 over 8. The probability of not spam is the total number of not spam emails over total, which is 5 over 8. So this is our prior. This is our prior about the probability of getting a spam email before even looking at one particular email. बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मैथ्स के स्टूडेंट के हमारे पास आने से पहले, शायद ऑब्जर्व करने से पहले क्या probability थी कि मैथ्स का स्टूडेंट होगा ये. All right, so now we can start counting and we can essentially just calculate the likelihood ratios for these, और वो अब देख लेते हैं किस तरह से निकलेंगी. So ये आपके पास दोनों priors आए हुए हैं, 3 over 8 और 5 over 8. Now assume करते हैं कि हमने जब इन तीनों emails को जाकर इसके अंदर से ढूंढा across all the, so सबसे पहला काम क्या किया हमने, across all of these 8 emails सारे unique words निकाल लिए. फर्ज करें हमारे पास जो सारे वर्ड्स थे इसमें वो हेलो, फ्रेंड, प्राइज, वर्क, विन था और कोई वर्ड ही नहीं था. इन
8 emails में मिलाकर total unique words ये थे. We just want a small toy example, right? And then just within the spam class, just within these 3 emails हमने ये counts निकाल लिए. Hello 2 दफ़ा आया हुआ है, friend जो है वो 3 दफ़ा आया हुआ है, price जो है ये 5 दफ़ा आया हुआ है, and so on, win जो हमारे पास आया हुआ है. Similar, अब हमने क्या किया कि अब हमने इन counts की मदद से we calculate the probabilities. So what's 17 here? This is actually important. So the 17 is the total count in the spam class. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So 17 हमारे पास total number of words हैं, total number of occurrences हैं words की. So ये क्या है? Total number of tokens हैं. So this is, so the probability, अगर आपको याद होगा हमने ये यूनिग्राम मॉडल के अंदर चीज़ देखी थी कि हम उसको डिवाइड करते थे जितनी दफ़ा वो चीज़ अकर हुई है डिवाइडेड बाय n, द टोटल साइज ऑफ द कॉर्पस. तो बिल्कुल वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं. सो लेट मी रब दिस एंड क्लीन दिस अप अ लिटिल बिट. So step 1, you find the vocabulary across all classes. Then within your own class, so within the spam class in this case, you find out the frequencies, the distribution of all of those words. और आपको मिला कि hello 2 दफ़ा आया है, the probability of hello जो है वो within this, given the class spam is 2/17. The probability of friend given the class spam is 3/17. Probability of prize given the class spam is 5/17. Probability of work given the class spam is 0. And the probability of win given the class spam is 7/17. And then you can clearly see किस तरह के words win और prize और hello ये ज़रा ज़्यादा आने के, like prize और win के बहुत chances होते हैं in a spam email. You have just won a big prize and so on, something like that. All right. Now you do the same for the not spam class, and again using the same vocabulary you find the counts and then you get the probabilities, because in counts के across अगर आप sum करें तो you get total number of 18 tokens. So therefore 7/18 is hello, friend 5/18, prize 1/18, work 3/18, and win 2/18. So now we essentially have everything that we were interested in. हमारे पास probability priors भी आ चुके हैं, हमारे पास इन words की, individual words की base के ऊपर likelihoods भी आ चुकी हैं. एक particular word आने की क्या likelihood है given a particular class. All right. So now फर्ज करें कि मेरे पास जो है वो hello friend के नाम से ये टोटल टेक्स्ट है उसमें, और ये एक नई ईमेल आई है, दिस इज माय टेस्ट ईमेल, एंड आई वांट टू क्लासिफाई दिस आइदर एज स्पैम और नॉट स्पैम. पॉज करें और जरा खुद से करने की कोशिश करें कैसे करेंगे. So all you need to do in a naive based classifier is just go word by word, हर उस word की यहाँ से probabilities उठाएं दोनों classes की, और दोनों के प्रायर्स को यूज करते हुए इनके ऊपर ओवरऑल प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि इस हेलो फ्रेंड की क्या प्रोबेबिलिटी है ऑफ बिलोंगिंग टू द स्पैम क्लास एंड ऑफ बिलोंगिंग टू द नॉट स्पैम क्लास, एंड देन जस्ट पिक द मैक्सिमम वन. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम गिवन हेलो फ्रेंड, ये हमारा हेलो फ्रेंड वो चीज़ है जो हमें मिली है, जो रिप्रेजेंटेटिव है इस ईमेल का, और स्पैम वो क्लास है जो हम देखना चाहते हैं कि स्पैम क्लास में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है. वुड बी गिवन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेलो गिवन स्पैम इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रेंड गिवन स्पैम. ये हमने जो एक काम यहाँ पर किया है ना कि हेलो और फ्रेंड को तोड़ के अलग कर दिया है, ये वो चीज़ है जिसको हम इसकी नाइव अजम्पशन कहते हैं, और अभी इसकी बात आगे जाके हम तफसील से करेंगे. सो वी जस्ट, ये आपका प्रायर है, और लाइकलीहुड के अंदर जितने वर्ड्स थे हर एक वर्ड की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ बिलोंगिंग टू, ऑफ कमिंग फ्रॉम द क्लास स्पैम हमने यहाँ से निकाली, और ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई है. सो ऑल वी नीड टू डू इज 3/8 into 2/17 into 3/17, which is 0.00778. We do the same for the other class. Probability of not spam given hello friend is equal to probability of not spam into probability of hello given not spam into probability of friend given not spam. अगर इसमें और भी words होते तो इसी तरह multiply होते चले जाते, and then you are left with this final probability 0.0675. इन दोनों में से कौन सी क्लास है spam या not spam में से जो इस probability को maximize कर रही है? Obviously it's the not spam class. So you just plug these in and into the H map. So the maximum A posteriori would be just the argmax over both of these, so you just find this out and it comes out to be not spam, because not spam के case में it's 0.0675 versus the 0.00778. So therefore your output would be the naive based classifier. This thing is going to say this email is not spam. All right, let's take another example. Here is another test email which is win prize.
पिछले वाली जो थी उसके अंदर hello friend था, अब when price है. This sounds like spam given our understanding of spams. So let's calculate the same for it. Probability of S given when price is calculated like this and comes out to be 0.045. Probability of when price given not spam comes out to be this. So therefore this is the higher one, and we get this as the probability, and the H map is the maximum a posteriori hypothesis is this is a spam email. Let's take another example. Win prize, win work. All right. So now you can clearly see कि जो win prize पिछले वाले में था जिसकी वजह से वो चीज़ स्पैम बन गई थी, वो चीज़ इसमें और ज़्यादा है. 2 दफ़ा win और 1 दफ़ा prize आया. So that means कि probability और बढ़ जानी चाहिए between the two classes, क्योंकि दोनों में हम एक ही लेंथ की ईमेल को by the way find out कर रहे हैं. Otherwise लेंथ्स अगर डिफरेंट होती ईमेल्स की तो मसला होता है. एक ही को दोनों तरफ कर रहे हैं तो लिहाजा इसकी probability ज़्यादा आनी चाहिए. But let's see what happens. You find out probability of spam given win prize win work is probability of spam into probability of win into probability of prize, again given s probability of win given s into probability of work given s. But when you calculate this is fine, but this is 0. You have never seen the word work occur in the spam emails. So therefore, although it could have turned out to be a very high probability, this made it 0. If we look at the other class, it turns out to be this. So very low probability. So अगर ये 0 ना होता तो clearly यहाँ spam win कर जाती, लेकिन यहाँ जो चीज़ win करेगी वो not spam win करेगी, which does not make sense. And this is the problem of zeros. Let's look at another one. You have win prize, win money. And again, you calculate the probabilities, and this time you find this is 0 because money doesn't even occur in your training data set across any class. So पिछली वाली एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में एक फ़र्क है, और ये ज़रा अच्छी तरह से समझ लें. पिछली एग्जाम्पल में जो वर्ड वर्क था वो हमारी वोकैबुलरी में एग्जिस्ट करता था. वो वर्ड सिर्फ हमें स्पैम क्लास में कभी नज़र नहीं आया था और उसकी प्रोबेबिलिटी इस वजह से 0 थी, लेकिन वो हमारी वोकैबुलरी में एग्जिस्ट करता था. So it was a word that was existent in the vocabulary, which means किसी क्लास में तो होगा across all classes. तो इस केस में वो not spam की ट्रेनिंग डेटा में कहीं ना कहीं था, spam में वो कभी नहीं था. ठीक है, ये एक किस्म का जीरो है. एक और किस्म का जीरो वो होता है जहां पे आपको ऐसा वर्ड मिला है जो आपकी सारी क्लासेस में कहीं भी अकर नहीं होता, वो आपकी vocabulary में शामिल नहीं है. It's out of vocabulary. This is a different kind of a zero. And when we try to solve the problem of these zeros, we essentially make a distinction between these two types of zeros when we solve this problem. So again आप यहाँ निकालेंगे तो अब ये दोनों के अंदर 0 देगी, क्योंकि ये आपकी वोकैबुलरी में एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपकी सब प्रोबेबिलिटी 0 आ रही हैं. ऑल्दो के विन प्राइज विन, तो विन प्राइज विन के थ्रू तो ये स्पैम बनती है, लेकिन नहीं होगी बिकॉज पूरी स्टेटमेंट ही आपकी पूरी प्रोबेबिलिटी ही 0 हो गई. ठीक है जी. So now the problem is the problem of the pesky little zeros. What do you do with these zeros? How do you remove the zeros somehow in a just manner, in a fair manner, so that they do not destroy the whole calculation of the probabilities? So you have already noticed, and we have already discussed this, that we have these two types of zeros. So if you just if we just go through the process one more time so that we are completely on the same page and you understand everything. We took a union of the vocabularies of all classes before calculating our histograms. ये frequencies की distributions ढूंढने से पहले हमने सारी individual classes, इस केस में spam not spam थी, अगर ये कोई और problem होती जिसमें इससे ज़्यादा classes होती, हर class के अंदर जाकर total vocabulary यानी total number of unique words निकाले थे, और वो सारे unique words को हमने उनका यूनियन लेके ओवरऑल हमने जो है वो vocabulary फाइंड की थी पूरी प्रॉब्लम की. राइट. सो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो हिस्टोग्राम्स आई थी, ये हमारे पास बैग ऑफ वर्ड्स के वेक्टर्स आए थे और प्रोबेबिलिटीज हमने निकाली थी. सो इसमें हमारी जो स्पैम की वोकैबुलरी थी उसमें हेलो था, फ्रेंड था, प्राइस था और विन था. वर्क नहीं था. एज यू कैन क्लियरली सी वर्क इसके अंदर मौजूद नहीं था, दैट्स वाई वो यहाँ 0 था, तो लिहाजा इसकी वोकैबुलरी 4 थी. और नॉट स्पैम की वोकैबुलरी 5 थी, उसमें हेलो, फ्रेंड, प्राइस, वर्क और विन सारे के सारे वर्ड एग्जिस्ट करते थे. सो दिस वाज द वोकैबुलरी ऑफ नॉट स्पैम.
So the overall vocabulary of the problem was the union of these two vocabularies. So the vocabulary size was 5. Obviously दोनों साइड पे नॉन ओवरलैपिंग चीजें यानी ओवरलैपिंग भी हो सकती थी, नॉन ओवरलैपिंग भी है, तो वो जाहिर है ये accordingly you can find out the individual vocabularies and the overall vocabulary of the system. So now the two types of zeros that we encounter अगर formally देखें, so these are the two types of zeros that we can encounter. The word WT belongs to the test vocabulary, and the word WT does not belong to the vocabulary of your training data. जो आपने ट्रेनिंग से vocabulary बनाई थी उसमें word नहीं है, लेकिन आपके टेस्ट डेटा में एक नया word आ गया. So where is the union of all of the all of the classes, the vocabulary of all of the classes. For example, the word money, ना वो इसमें स्पैम में कहीं था आपकी ट्रेनिंग के वक्त, और ना वो नॉट स्पैम में कहीं था, यानी एक नया वर्ड जो आपने इससे पहले कभी देखा ही नहीं है. इनको हम आउट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स या OOVs कहते हैं. ठीक है. दूसरा वो जीरो है जहाँ पे the word WT belongs to the test vocabulary, and the word WT does not belong to the vocabulary of that particular class, but it belongs to the vocabulary of the overall training data. For example, the word work. तो वर्क जब हम स्पैम के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर वर्क नहीं मिला है, लिहाजा ये जीरो यहाँ पर आया हुआ है. हाउएवर ऐसा नहीं है कि आपकी वोकैबुलरी के अंदर ही ये वर्ड अननोन है, तो इसका मतलब है किसी और क्लास में आया होगा. दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ जीरो. ठीक है. तो अब इन दोनों जीरोस को हम यूजुअली अलग अलग तरह से डील करते हैं, इनको अलग अलग तरह से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. सो आई होप कि दिस इज द प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू. एक वो है जिसमें ऐसा जीरो है जो कि हमारी वोकैबुलरी के लिए नया है, ट्रेनिंग डेटा में कभी वो वर्ड देखा ही नहीं गया. दूसरा वो जीरो है जिसमें ट्रेनिंग डेटा में तो वर्ड देखा गया, उस क्लास के लिए नहीं देखा गया जिसके लिए कैलकुलेशन हो रही है. किसी और क्लास में वो हो सकता है वर्ड हो, वोकैबुलरी में मौजूद है. All right. So the out of vocabulary words are the first type here. So these are the word T belongs to the test data, and the word T does not belong to the vocabulary at all, where V is the union of the V class for all of the classes. So these are known as the unknown words or the out of vocabulary words. So for classification tasks, अब ये बड़ा important है, इस बात को इसी तरह से समझना. For classification tasks we just ignore these words. That is closed vocabulary assumption. हम assumption ये ले लेते हैं यहाँ पर कि बस वही words टेस्ट डेटा में आ सकते हैं जो ट्रेनिंग में आए थे, और कोई वर्ड आएगा तो इग्नोर कर देंगे आप. ठीक है. In other words, you just filter all out of vocabulary words from the test data before calculating the age map. तो आप सबसे पहले ये करेंगे, अपनी टेस्ट ईमेल के अंदर जाएंगे, हर वर्ड पे जाके देखेंगे क्या ये मेरी ट्रेनिंग की vocabulary में है नहीं है, है नहीं है, है नहीं है, और जितने वर्ड नहीं होंगे उनको ज़ाया कर देंगे. अच्छा, अब ये assumption को थोड़ा सा अगर गौर करें, इस assumption की उस वक्त तो सेंस बनती है अगर ट्रेनिंग डेटा बहुत बड़ा है, यानी इतना है कि उसने पूरी उस जॉनरा को कवर कर लिया, स्पैम नॉट स्पैम में है तो लाखों ईमेल्स के ऊपर आपने ट्रेन किया हुआ है, तो अब अगली ईमेल्स में कम ही ऐसे वर्ड्स आएंगे जो कभी भी इससे पहले आपने ना देखे हों अपनी ट्रेनिंग के अंदर. लेकिन इफ़ योर ट्रेनिंग डेटा इज स्मॉल, तो उस केस में तो ऑब्वियसली दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि आप तो बहुत से ऐसे वर्ड्स होंगे, हो सकता है आप ईमेल पूरी ही इग्नोर कर दें, खाली स्टॉप वर्ड्स ही बच जाएं, एंड दिस दीज दैट ये बच जाएंगे खाली, और बाकी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स लाइक लम्स का वर्ड उसमें आया हुआ है, या उसके अंदर जो है वो आई डोंट नो कोई गवर्नमेंट के इदारे का नाम आया हुआ है, कोई उसके अंदर इस तरह की और चीज़ आई हुई है, कोविड की किसी वैक्सीन का नाम आया हुआ है उसके अंदर, आपने कहीं उसमें जो है वो फाइजर बोला हुआ है, या उसके अंदर कहीं आपने आई डोंट नो स्पुतनिक बोला हुआ है, तो ये वर्ड सारे के सारे इग्नोर हो जाएंगे बिकॉज ये आपने अपनी ट्रेनिंग में कभी देखे ही नहीं है. सो you can do this, but this needs to be done carefully. So we do go ahead with this solution, especially for classification task. ये 2-3 क्लासेस में 10 क्लासेस में जब क्लासीफाई कर रहे होते हैं तो हम क्लासिफिकेशन में इस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं कि we just ignore any out of vocabulary words, और इस assumption को हम कहते हैं क्लोज्ड vocabulary assumption, कि vocabulary उतनी ही है जितनी हमारी ट्रेनिंग की थी, और कोई नया वर्ड vocabulary में नहीं आ सकता. ये सॉल्यूशंस ऐसी जगहों पे तो बहुत अच्छे चल जाते हैं जहाँ पे वाकई क्लोज vocabulary अप्लाई हो रही होती है. लाइक फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा क्लासीफायर बनाना है जो लेट से किसी एक बुक या एक सेट ऑफ बुक्स के ऊपर चलेगा, लाइक यू आर वर्किंग विद द कुरान, एंड फॉर एग्जांपल यू वांट टू डू अ पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन, आयात की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं आप 2 क्लासेस में और व्हाटएवर. Now in this situation obviously there is no new words जो कि आपके टेस्ट डेटा में आएंगे, वही वर्ड्स आएंगे और उनकी कोई क्लासिफिकेशन आपने करके निकालनी होगी. तो इस केस में the out of vocabulary assumption makes perfect sense.
ठीक है, कोई मेडिकल की बुक्स हैं जिसमें आपने कोई 1000 किताबों का एक डेटाबेस बनाया हुआ है एंड यू वांट टू डू सम काइंड ऑफ अ मशीन लर्निंग ऑन इंटेलिजेंट क्वेरीज ऑन दैट, कि किसी ने को पूरे पूरे सवाल लिखकर उस बुक में सर्च कर रहा है एंड यू आर ट्राइंग टू मैच इट विद द इंटेंट या विद द समरी और विद द टॉपिक ऑफ द discussions in the book. तो इस किस्म की चीज़ों में out of vocabulary की ये assumption, closed vocabulary assumption लेना makes perfect sense. However, when everything new can be a part of your test data, then out of closed vocabulary assumption, classification tasks के अलावा और even within classification tasks अगर training data छोटा है तो this could be too restrictive of an assumption and could lead to a lot of problems. For language modeling, however, जो कि हमारा असल में काम है, we estimate the probability of coming across OOVs in our test data beforehand and use that estimate as the probability of the out of vocabulary words. तो अब ये ज़रूर याद रहे कि ये कोर्स NLP का नहीं है, स्पीच का है, तो लिहाजा हम यहाँ पे बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीकों से अभी पूरा इसका नहीं सीखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया हम ये कर सकते हैं कि हम इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पहले से कैलकुलेट करके रख दें कि हमें ऑन एवरेज किसी टेस्ट डेटा के अंदर कितने आउट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स एनकाउंटर होते हैं. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन बेसिकली टेक योर ट्रेनिंग डेटा, यू कैन स्प्लिट इट इन टू पार्ट्स, और ऑब्वियसली इसके भी बहुत से तरीके होते हैं दैट वी कवर्ड इन द कोर्स ऑफ मशीन लर्निंग. सो यू स्प्लिट द ट्रेनिंग डेटा इनटू टू पार्ट्स एंड यू कॉल वन ऑफ देम एज द ट्रेनिंग डेटा एंड द अदर एज अ वैलिडेशन सेट. ठीक है, एंड देन यू यूज द वैलिडेशन सेट, अपने ट्रेनिंग डेटा के ऊपर वोकैबुलरी बनाई और वैलिडेशन सेट में जाकर देखा कि मुझे कितने नए वर्ड्स मिले हैं. इससे मुझे पता लग गया, फॉर एग्जांपल मेरी ट्रेनिंग वोकैबुलरी का साइज V था और जब मैंने वोकैबुलरी जो वैलिडेशन सेट के ऊपर जाकर वोकैबुलरी फाइंड की तो मुझे पता लगा कि जी के नए वर्ड्स मुझे मिले हैं. दैट मीन्स कि मुझे के नए वर्ड्स मिल रहे हैं इन एडिशन टू द V वर्ड्स दैट आई हैड इन द वोकैबुलरी फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा. तो इस नंबर के को मैं एस्टिमेट ले सकता हूँ of encountering an out of vocabulary word, and basically I can find out then the probability of out of vocabulary words. I can just sum it up and just mix it in one number, and that would be the probability of the UNK, the unknown word. ठीक है, एक तरीका ये है. You can also start by using an initial word list before looking at the training data. इसका तरीका ये होता है कि आप कहीं और से किसी प्रीवियस रिसर्च से एक वोकैबुलरी लेकर आएँ और आप अपने पूरे ट्रेनिंग डेटा के ऊपर जाकर देखें कितने नए वर्ड मिलते हैं, उसकी बेस पे इस अननोन की प्रोबेबिलिटी निकाल लें. या फिर यू कैन इवन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनकाउंटरिंग न्यू वर्ड्स बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेयर वर्ड्स. सो आप अपने ट्रेनिंग डेटा के अंदर जाकर ये देखें कि कितने ऐसे वर्ड्स थे जो बहुत कम अकर हुए हैं. सो जो चीज़ कभी अकर नहीं हुई उसकी प्रोबेबिलिटी उससे बहुत मिलती जुलती है जो चीज़ें एक दफ़ा अकर हुई हैं, जो आपके सिंगलटन्स हैं. सो वहाँ से भी इनकी प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट करने के तरीके होते हैं. सो देयर आर एक्चुअली वेरी कंक्रीट वेज ऑफ डूइंग दिस, लेकिन अभी के लिए हमारे डिस्कशन के लिए हैविंग अ नॉलेज एट दिस लेवल जो है वो काफ़ी है. अगर आप ये करना चाहें एग्जैक्टली कैसे करना है तो यू कैन जस्ट लुक एट योर स्पीच एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग बुक, जिसके अंदर आई थिंक इट्स चैप्टर 3, जिसके अंदर उन्होंने ये चीज़ बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई है. थोड़ा सा आगे जाकर हम भी शायद इसको थोड़ा फर्दर बात करें, लेकिन फिलहाल के लिए ये इतना काफ़ी है कि आपको पता हो कि फॉर क्लासिफिकेशन वी जस्ट इग्नोर देम यूजुअली. For classification like language modeling classification, where there are V number of classes or there are large number of classes, we usually come up with some intelligent ways of figuring out the probabilities of out of vocabulary words before calculating the H map. जो सेकंड सो ये इस प्रॉब्लम को हाँ पहले एक दफ़ा सॉल्व करके देख लें इस चीज़ में. सो यू कैन सी हियर कि विन प्राइज विन मनी, मनी हमारा OOV था, हमने उसे इग्नोर कर दिया. इग्नोर करके अब जब हमने प्रोबेबिलिटीज़ दोनों निकाली तो वी गेट एक्चुअल प्रोबेबिलिटीज़ एंड क्लियरली दी स्पैम क्लास विंस, और हमने इसको स्पैम मार्क कर दिया. सो दिस इज़ हाउ वी डील विद आउट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स इन सिंपल क्लासिफिकेशन. All right. Second problem where the word belongs to the test vocabulary. It also belongs to the training vocabulary, but it does not belong to the vocabulary of a particular class. So for a subset of classes. So for this we use smoothing या discounting. अब इसके पीछे थ्योरी ये है कि ये वर्ड जो इस क्लास में बिलोंग नहीं कर रहा, इसकी बेस पर हम एक बहुत बड़ी assumption ले रहे हैं कि ऐसा वर्ड इस क्लास से बिलोंग कर ही नहीं सकता, स्पैम में ऐसा वर्ड आ ही नहीं सकता. अब ये assumption किस चीज़ पे बेस्ड है? ट्रेनिंग डेटा के ऊपर. सो यू आर रिलाइंग ऑन द ट्रेनिंग डेटा रादर टू मच. आप उस पर बहुत इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कि आप किसी चीज़ को ज़ीरो कह रहे हैं कि इसके आने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है. ज़ीरोज़ और वंस प्रोबेबिलिटी में ऐसे नंबर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाई कॉन्फिडेंस के केस में आ सकते हैं, तब भी बड़ी मुश्किल से. तो यूजुअली ये चीज़ें बड़ी सस्पिशियस होती हैं अगर आप किसी चीज़ को ज़ीरो और वन कह रहे हो, तो लिहाजा एग्जैक्ट ज़ीरो और एग्जैक्ट वन. तो लिहाजा हम यहाँ पर करते ये हैं कि
And this is one of the problems with the maximum likelihood estimation as well, using relative frequencies, कि आपने ट्रेनिंग डेटा के अंदर जितनी दफ़ा इस वर्ड को देखा, इन दिस केस जीरो, आपने कहा इसकी प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही है. अब अगर ट्रेनिंग डेटा से हट के ज़रा सा भी आपका टेस्ट डेटा आ गया तो आप कहेंगे इसमें प्रोबेबिलिटी जीरो है, जबकि अब वो जीरो नहीं है. सो यू आर रिलाइंग टू मच ऑन योर ट्रेनिंग डेटा, यू आर ओवर फिटिंग टू योर ट्रेनिंग डेटा. सो ये ओवर फिटिंग का जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के जो हमारे पास तरीके होते हैं, बेसिकली इसको हम जनरलाइजेशन कहते हैं. हमारा मॉडल को हम जनरलाइज कैसे करवाएं, कि उसने ट्रेनिंग डेटा से जो कुछ सीखा है ठीक है, प्रोबेबिलिटीज लर्न की हैं, लेकिन उसकी उसकी शिद्दत को ज़रा कम कर दें. सो जस्ट स्मूथ इट आउट अ लिटिल बिट, डिस्काउंट इट अ लिटिल बिट, अपनी बिलीव्स को थोड़ा सा नरम कर लें जो हमने सीखी हैं ट्रेनिंग डेटा से. उन टेक्निक्स को दे कम अंडर द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्मूथिंग एंड डिस्काउंटिंग, एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स, रेगुलराइजेशन एंड अदर थिंग्स, जो जिनको हम डिस्कस किया करते हैं. ये बहुत ज़रूरी होती हैं इवन फॉर more sophisticated models like your neural networks and others. इसके अंदर बहुत सी techniques हैं. There is the Laplace smoothing, which is also known as the add-one smoothing, जिसको अभी हम देखेंगे. There is Witten-Bell discounting. There is interpolation, back-off, good Turing smoothing, and Nasr-Ney smoothing. Nasr-Ney is one of better smoothing methods that we have for language modeling. Fortunately for classification tasks, even the simplest of techniques like add-one smoothing work fine. Unfortunately for language modeling it does not work very well, और ये खुद बहुत सा बायस ले आता है हमारे एस्टिमेटर के अंदर, हमारे मॉडल के अंदर. सो लिहाजा यूजुअली फॉर लैंग्वेज मॉडलिंग वी प्रेफर गुड ट्यूरिंग स्मूथिंग और नेजर-ने स्मूथिंग. फॉर सिंपल क्लासिफिकेशन टास्क्स we just go ahead with add-one smoothing. So add-one smoothing के अपने कुछ बड़े प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी सी हम उसकी बात शायद अगर मौका मिला तो कर लेंगे, बट फॉर नाउ I'll just be doing add-one smoothing for you. So मेरा अभी मकसद ये है कि मैं आपको खाली इन चीज़ों को सॉल्व करने का कुछ तरीके या सबसेट ऑफ वेज देकर आगे बढ़ जाऊं, ताकि हम स्पीच के इंटरेस्टिंग टास्क्स में आ जाएं. नॉट दैट कि यहाँ से हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की तरफ बढ़ें, जहाँ पे फिर ये चीज़ बहुत डिटेल में हम स्टडी करते हैं. अगेन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, chapter 3 of your book has all of the details, and it includes a description of most of these smoothing mechanisms, which you can study on your own. They're not difficult, they're actually fairly straightforward and very intuitive. तो इसमें कुछ ये है कि जो जुराफ्स्की के अपने लेक्चर्स हैं ऑनलाइन, देयर ओल्ड लेक्चर्स, बट ही हैज़ आल्सो डिस्कस्ड सम ऑफ दीज मेथड्स इन अ लॉट ऑफ डिटेल इन हिज ओन लेक्चर वीडियोस. आई थिंक दे आर अवेलेबल फॉर फ्री ऑन यूट्यूब. Okay, so let's now look at add-one smoothing in the context of वो जो work वाला word आ गया था. तो अब ज़रा हम add-one smoothing को देखते हैं कि करते कैसे हैं. So ये आपके पास distributions हैं जो आपने vectors search किए, find किए अपनी दोनों spam और not spam की classes में, और ये आपके पास probabilities और counts आए हुए हैं. And you can clearly see कि this zero is a problem. इसको किसी तरह से हमने ख़त्म करना है. The pathway of add-one smoothing is कि आपकी हो सकता है vocabulary में बहुत सारे zeros हों, आपको exact zero ख़त्म करना है. इनको and the theory is कि anything which occurred 0 times in your corpus is very similar to anything which occurred once in your corpus. So you just replace all of the zeros with ones, और इसको uniform अंदाज से करने के लिए we essentially replace everything with a one added to the count. So सारे counts में one add कर देते हैं और फिर उसको हम normalize कर देंगे. So all you do is you go to your entire vocabulary, और hello आपको 2 दफ़ा मिला था, आपने कहा नहीं ये मुझे +1, ये मुझे 3 दफ़ा मिला है. और friend मुझे 3 दफ़ा मिला था, मैंने कहा नहीं ये मुझे 4 दफ़ा मिला है. और prize मुझे 5 दफ़ा मिला था, मैंने कहा नहीं 6 दफ़ा मिला है. और work जो कभी नहीं मिला था उसे मैंने कहा ये मुझे 1 दफ़ा मिला है, and so on. सब में मैंने 1 ऐड कर दिया. This is where you have just added ones. Alright, so for each class we have added v1s. जितने आपकी vocabulary है उतने आपने ones ऐड किए. So for each class we have added v1s. v1s यहाँ ऐड हुए हैं, v1s यहाँ ऐड हुए हैं, जितनी क्लासेस होंगे सब में v1s ऐड होंगे. तो लिहाजा जब ये probabilities हम निकाल रहे होंगे तो हम इसको v पर ही डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर में भी v ऐड कर देंगे, ताकि ये चीज़ नॉर्मलाइज हो जाए. ठीक है. So we need to normalize them by adding v to the denominator. So for example probability of hello given s, जो आप इससे पहले निकाल रहे थे यहाँ से hello और s यानी क्लास स्पैम के अंदर hello कितनी दफ़ा आया डिवाइडेड बाय क्लास स्पैम के अंदर कोई भी वर्ड आपके पास कितनी दफ़ा आया, आप यहाँ से निकाल रहे थे. सो बेसिकली वोकैबुलरी पे डिवाइड कर रहे थे. अब आप यहाँ पे सॉरी नंबर ऑफ टोकन्स पे डिवाइड कर रहे थे. नाउ एसेंशियली व्हाट यू डू इज यू ऐड अ 1 टू द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ हेलो, ये जो आपने किया है, एंड देन यू ऐड अ v टू द डिनोमिनेटर. सो आपने यहाँ पर v, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ही वर्ड होता है वोकैबुलरी के अंदर, तो ये डिनोमिनेटर में 1 होता है. वोकैबुलरी में आपके पास 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं, तो लिहाजा आपने यहाँ पर 5 के ऊपर आपकी डिनोमिनेटर के अंदर आपने 5 ऐड कर दिया. सो दिस v बाय द वे इज द शेयर्ड वोकैबुलरी, जो यूनियन लेने के बाद की वोकैबुलरी है. ठीक है जी, क्लियर है.
In our example, v is 5. So therefore, probability of hello would be 2 plus 1 over 17 plus 5, which comes to 3 over 22. यहाँ ये चीज़ बस सिर्फ ऑब्जर्व कर लीजिए कि इस नए तरीके ऑफ प्रोबेबिलिटी ने हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी को डाउन कर दिया है, और ये जो इसने प्रोबेबिलिटीज़ को डाउन किया है ये हम आगे जाकर देखेंगे कि इससे बाज़ दफ़ा जो इसके नुकसानात में से एक चीज़ है वो ये है कि जिन चीज़ों के बारे में हम सचमुच में कॉन्फिडेंट होते हैं उन चीज़ों के बारे में भी बाज़ दफ़ा हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, बिकॉज दिस v could be really big, so for the v could be 10,000. So if the vocabulary is 10,000, then you're adding 10,000 to the denominator for all probabilities, जिसकी वजह से अगर आप किसी चीज़ के बारे में इतने कॉन्फिडेंट भी हैं तो हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो के ज़ीरो के करीब आ जाए। तो इट लोअर्स, जितने ज़्यादा डेटा स्पार्सिटी है, जितना ज़्यादा आपका पास जो है वो वोकेबलरी बड़ी है, स्पेशली ये जो सेकंड वाली बात है, जितनी वोकेबलरी बड़ी है उतनी एडवांस स्मूथिंग जो है वो हमें कॉन्फिडेंट इवेंट्स की भी प्रोबेबिलिटीज लो कर देगा और उनको जीरो के करीब ले आएगा। दैट्स वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, बट एनी हाउ सिर्फ ये मेंशन कर रहा हूँ मैं, हम करेंगे फिलहाल यही वाला यूज़। ठीक है जनाब। सो ये आपके पास नई प्रोबेबिलिटीज आ गई ऑफ क्लास स्पैम, ये नई प्रोबेबिलिटीज आ गई ऑफ द क्लास नॉट स्पैम। All right, and now we are ready to basically calculate the probability of this test email, जिसमें हमारे पास word work नहीं था पहले। अब जब उसको calculate किया तो we can clearly see कि हमारे पास ये probability आई spam की और ये probability आई not spam की, and clearly here the spam wins. So this is add one smoothing, very simply solving the problem of zeros which occur in a particular class but for words which do exist in the training vocabulary. Alright, so we'll stop here today. आज हमने कम से कम classification का पूरा तरीका देख लिया using the naive based classifier. We have also seen what do you do with zeros and the kinds of zeros that we have, and the kind of solutions that we have for those types of zeros. In the next lecture, inshallah, we'll continue our discussion in which we will look at the some of the distinguishing features of the naive based classifier, some of which we have already discussed in some detail when we were looking at sequences. And the second and the important thing that we'll be talking about is how do you deal with the zeros when you find them in bigrams or trigrams or higher level n-gram models. So that would be our discussion next time. Inshallah, see you in the next video.